We are here for anchoring of yoga. Hey Natik, do you know what is yoga? Yoga is a mental, physical and spiritual practice which is organized in India. Yoga is techniques of controlling body and mind. It aims to keep body healthy through a series of mental and physical exercises. It aims to keep body healthy. Okay, so do you know yoga firstly in India, but when the benefits of yoga came out, so the whole world started to do it. So, you can do yoga? Anyone can do yoga, there is no age limit for that. Means young, old, all age people can do this? Yes, anyone can do this. Okay, tell me last question. Why it is said that कि यह है योगा और यह इंस्पायर स्कूल के बच्चों से बहुत ही अच्छे से होगा? Because yoga is also taught in our school. And do you know our most of students know how to do yoga? Okay, so without wasting time, let's go for our next performance, yoga. Before starting, I want to tell the anchoring summary in Hindi also. हमारी अगली परफॉर्मेंस है योगा परफॉर्मेंस। योगा की उत्पत्ति भारत देश में हुई थी, पर जब इसके लाभ पूरी दुनिया को पता चले तो पूरी दुनिया ने इसे करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस योगा। सो प्लीज वेलकम आवर योगा स्टूडेंट, बिग हैंड्स फॉर देम। पंकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। पाणिवादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं मनोज्ञहेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्तति दृष्टिपात नष्ट पापजा
निरञ्जनम्